Welcome to my channel CA Guidance Education, and today we are going to discuss about the balance sheet and its contents. तो balance sheet क्या है? What is a balance sheet? Balance sheet is a statement which portrays the financial position of a concern or an entity at a particular point of time. ठीक है? Particular point of time में balance sheet क्या portray कर रहा है? Financial position of the concern. Exactly 31st of December हम जैसे कि balance sheet close करते हैं, उस दिन उसका क्या financial position है उस एंटिटी का. ठीक है. अब बैलेंस शीट में क्या है कि बैलेंस शीट में वी हैव द फर्स्ट व्हाट द कंपनी ओन्स. कंपनी के पास क्या एसेट्स हैं, दैट इज द व्हाट द कंपनी ओन्स, एंड व्हाट द कंपनी ओज टू थर्ड पार्टी. मैंने थर्ड पार्टी को क्या पेमेंट करने हैं, दैट इज अ क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज. ओके, क्या क्या पेमेंट करना, दैट इज अ लाइबिलिटी साइड. एंड द बैलेंस दैट इज एसेट माइनस द लाइबिलिटीज, दैट इज अ इक्विटी फंड. सो ये है जो इक्विटी कैपिटल, दैट इज द फंड. सो वी कैन से द बैलेंस शीट क्या करता है, व्हाट द कंपनी ओन्स, व्हाट द कंपनी ओज टू थर्ड पार्टी, एंड द बैलेंस दैट इज द इक्विटी फंड. Right? The asset side, it has the fixed asset, current assets, investments if any, and the another side liabilities, equity holders fund, reserve and surplus, provisions, creditors. Right? Any outside loans are there, that will come there. So abhi this balance sheet is a statement, it is not a account. Since it is not an account, there will be no debit and credit. Okay, यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट नहीं है क्योंकि ये अकाउंट नहीं है. लेकिन फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल, फॉर द अंडरस्टैंडिंग द पीपल हु मेकिंग द फाइनल अकाउंट्स, वी ट्रीट द एसेट साइड एज अ डेबिट साइड एंड द लायबिलिटी साइड एज अ क्रेडिट साइड. बट देयर इज नो डेबिट एंड क्रेडिट पोर्शन इन द बैलेंस शीट बिकॉज इट इज अ स्टेटमेंट. नाउ अभी बैलेंस शीट में एक दो मेथड्स फॉलो करते हैं. एक करते हैं जो ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, व्हाट दे डू, दे रिप्रेजेंट फर्स्ट दोज फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज अ मोस्ट प्रोमिनेंट फर्स्ट, प्रोमिनेंट और परमानेंट. परमानेंट जो है फिक्स्ड एसेट्स फर्स्ट एंड द लीस्ट परमानेंट at the last. So the least permanent is a cash bank, all these things, current assets, and the most permanent are fixed assets. So they follow the prominency preference method. And the other method which is followed by the institutions like banks, they what they do, maximum most liquid assets first, like cash bank, and the least liquid assets are the last, that is the fixed assets. So they are, this method is known as a liquidity preference, and this is followed by the institutions like banks. Okay, अभी ये दो मेथड फॉलो. बट ऑन द लाइबिलिटी साइड दे ऑलवेज हैव द ओनर्स इक्विटी फंड फर्स्ट, शेयरहोल्डर्स फंड, देन रिजर्व एंड सरप्लस, देन द क्रेडिटर्स एंड लोन्स एंड प्रोविजंस if any. So this is the format as well as the what is the containing balance sheet is containing. The balance sheet itself portrays a financial position of a concern at a particular point of time. That means for financial reporting of the concern on at that date. Okay. Thank you.